Hello, good evening, everyone. I once again welcome you all to Prepcademy live speaking sessions. So today again we are going to take up the speaking module. As most of you face most of the problem in this module, so I would like to ask you first of all your doubts. That what are your doubts? What is the problem that you face in while speaking? And then we'll move to the practice session. We'll have a proper mock, and mock is the replica of how your paper is going to be, how your exam is going to be conducted, and I'll ask you the questions in the same manner. So first will be the introductory round, and then the cue card, and then the follow-up questions. So if you have any doubts, so the students who are watching a video live on YouTube or who are watching the videos, the uploaded videos, if you have any question, if you have any problem or confusion, you can always put your questions under the video in the comment box, and we'll reach you as soon as possible. So first of all, for the students who are just have started to prepare for the exam and they don't know anything about IELTS speaking or any of the modules of IELTS, first of all, I would like to tell you about the pattern of the IELTS speaking. So as I told you that there are 3 rounds in the IELTS speaking, and the exam is of like approximately 10 to 15 minutes. And the lines or the time is definite, that how much you are going to speak for one question is definite. So the round 1 is your introductory question, and in that round they can ask you the questions about yourself, like your introduction, what you do, where you belong to, and what is your aim in life, or like very general questions, like routine questions, like about advertisements, about education, about leisure time. So like these are some of the like common topics they can ask you in the first round. And then comes your cue card. So cue card is they will give you a topic, and then you have to just first of all they will give you 1 minute to make your points, and then they will give you 2 minutes to speak on those points. And so you have to make a story, or you have to speak continuously for 2 minutes. And it is very important that you speak exactly for 2 minutes, and not less than two and not more than two. So not less than two is like you should not speak for less than 2 minutes. If you speak more, they will automatically like stop you, that your time is up. But if you speak less than 2 minutes, then that is a very big mistake. So this is a big mistake that you should avoid making in your speaking, because if you haven't completed your cue card, they will not evaluate you. Hi, Savijot. Good evening. Good evening, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm also good. Okay, so Savijot has her exam on 6th. So Savijot, any last moment questions? कोई भी confusion, कुछ भी. So you can ask me anything, because now you just have 2 days for your exam. So you can ask me anything that you think that I should prepare at the last moment. So first of all, I'll give you Savijot, आप कुछ you can write your queries, और तब तक I'll give you some last minute tips. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपने उनका एग्जाम है संडे को, या कमिंग वीक में, या विद इन अ वीक, विद इन 10 days. तो उनको अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं मे बी 2 months से, 3 months से, 4 months से. नाउ व्हाट इज देयर लास्ट मोमेंट टिप, कि उनको लास्ट मोमेंट पे क्या टिप्स चाहिए, उन्हें क्या देखना चाहिए. सो आई बिलीव कि अगर आप 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट योर वीकनेसेस. सो ग्रामर है, चाहे वो आपकी डिलीवरी है बोलने की, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी है. सो आई थिंक नाउ अब तक यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि आपकी वीकनेस क्या है. तो अब जो आपके लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसली उन वीकनेस पे काम करना है. लाइक इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू सी दैट इज दिस माय वीकनेस स्टिल परसिस्टिंग, और आई हैव ओवरकम दैट. अगर मैं एग्जांपल दूं कि somebody हैज अ प्रॉब्लम इन ग्रामर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यू हैव टू इवैल्यूएट कि अभी तक मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम है कि मैंने वो आई हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम. So these are your last moment things that you need to do. And I'll tell you that what things you have to keep in mind at that time. First of all, don't be nervous. सबसे important बात, बिल्कुल nervous नहीं होना. It is an informal kind of communication. आपको बस बात करनी है जाके, जो वो पूछेंगे बस उनका जवाब देना है. Just be honest.
जो आपके दिमाग में पहला थॉट आया उनका क्वेश्चन सुन के, जस्ट से दैट। ओवर थिंक नहीं करना कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं या मैं कुछ बहुत फैंसी बोल दूं, नो नीड फॉर दैट। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर्स। और उसके बाद बी ऑनेस्ट, बी वेरी पोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी पोलाइट, ऑलवेज ग्रीट योर टीचर। पोलाइट रहो, बहुत ऑनेस्ट रहो अपने आंसर्स के साथ। And if you're not understanding anything, just ask them, can you please paraphrase the question for me? Or if you were not able to listen properly, then tell them, could you please repeat the question? And it is better than giving wrong answer. तो रॉन्ग आंसर मत दो, उनको एक बार बोल दो कि रिपीट कर दो आप। अगर आप पैराफ्रेज बोलोगे तो वो वर्ड को किसी और सेंस में चेंज करके आपको बता देंगे। सो दैट इज पैराफ्रेजिंग। और उसके बाद यू हैव टू बी वेरी लाइक, आपको जैसे हम अपने फ्रेंड से या अपने किसी कलीग से या अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से बात करते हैं ओपनली, वी कम्युनिकेट, वैसे ही हमें कम्युनिकेट करना है, क्योंकि दे विल सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो। सो यू हैव टू कम्युनिकेट, जैसे हम पूरे एक्सप्रेशन से, लाइक इफ वी फील सैड हमारे फेस पे आता है, इफ वी आर हैप्पी इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर फेस। सो दैट इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू। ओके सभी, जो अगर आपको कुछ पूछना है सो लेट मी नो। ओके सविजोत, सो विल स्टार्ट विद द मॉक नाउ। हम मॉक से स्टार्ट करते हैं, एंड इन द मीन टाइम अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो ज्वाइन। अभी हम आपके मॉक से स्टार्ट करते हैं तब तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और मैंने जो आपको आपकी मिस्टेक्स बताई हैं या वीकनेस बताई हैं, अब नाउ दिस इज योर चांस टू इम्प्रूव देम। तो जो मैंने आपको बोला है उसको मॉनिटर करना, उसको कॉन्शियसली ठीक करने की ट्राई करना, एंड देन गो फॉर इट। ओके okay, so Vijayot, your first question is, how often do you read? मैम प्लीज रिपीट करना। How often do you read? I usually read once in the day because I gain knowledge by reading, and I also improve my reading skills. Moreover, I gain many Hi Jashan, good evening. Hi Jashan, are you there? Okay, so Vijayot, so your next question is, do you have many books at home? So Vijayot, I cannot hear you. If you are speaking something, you're not audible. Hello. Yes. Okay. क्या था मैम क्वेश्चन? Do you have many books at home? Definitely, I have many books at home because I keen in reading. That's why I read novels, and my study-related books is also available at my home. Okay. Do Indian people do enough reading? Yes, Indian people are interested in reading because they think it improves the skills, and also people read magazines and newspapers every day. Okay. Do Indian people like to read? Yeah, as I told you as I told you earlier. Earlier. Yeah, as I told you earlier, people love to reading because they get knowledge about their environment, and also about the
recent मैम क्या करंट अफेयर्स अबाउट करंट अफेयर्स मैम पता नहीं जब बोलती हूँ तो वर्ड पता है क्या बोलना है पर कई बार ऐसा होता है कि अब देखो, आपको करंट अफेयर्स नहीं, दिमाग आपने रिसेंट बोल दिया, तो आपको समझ में नहीं आया आगे क्या बोलना, तो सिंपल लैंग्वेज में आ जाओ कि द रिसेंट थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड, और द रिसेंट न्यूज यस बोल दो, मतलब सिंपल लैंग्वेज पे आ जाओ ना, फिर ब्लैंक होने से अच्छा दिस इज बेटर यस कि मैम आप सिंपल लैंग्वेज पे आ जाओ, कि सिंपल, या बोल दो रिसेंट न्यूज या सिंपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर बार वोकैबुलरी का वर्ड ढूंढो, तो ब्लैंक होने से अच्छा है जस्ट कम टू वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके मैम Okay. So what kind of people like reading and what kind of people don't like reading very much? people uh, people who are I think literate people often read the books and newspapers also, but some people who are not keen in reading, uh, they are not like to read. Okay. So what type of books children read nowadays? I think most of the children like to read the story books, and also some children read the books related to their study or subjects which they studied in the school. Okay. So do you think children have lost their interest in stories? Yes, I think because as technologies increase day by day, so children are spend most of the time on their mobile phones, and they have no any interest in stories. They don't have any interest. Oh, No, any koi word nahi hota. Don't have any interest. they don't have. Okay. Can story books be an ideal gift for children? Of course, it is a good gift for children because it enhances their knowledge, and also they improve their reading skills by reading the storybooks. And if the stories are motivational, then they get encouraged from them. Okay. What can be done to encourage the habit of reading among children? Uh, at It is a main responsibility of parents and teachers. So in the school, teachers give them storybooks or uh, interested books which children are like. So by this, they can encourage them. How does reading help a child? Uh, Reading enhance the knowledge of the children because if children read the book, they get new words and vocabulary also, and they know about the facts or yeah, they know about. So, so अगर आपने और बोल ही दिया तो आप कुछ भी बोल दो कि they get to know about the facts or they get the knowledge about the subject. Yes, ma'am. So, what sort of books can be suggested to children to read? Uh, from my perspective, children should read books related to related to कुछ भी बोल दो related to their subjects or their interest or their interest subject of interest और जनरल नॉलेज बोल दो, कुछ भी बोल दो. yes, ma'am. So, uh, how much should a children read every day? Uh, children should, I think for daily to enhance the skills of reading. By this, children can improve their reading, and also they get a habit to read the books. What is the difference between the books sold in the past and the books sold nowadays? In the past, books are sold related to Books stories. were books were sold. Books were yes. मैम फिर वर के साथ तो सोल्ड नहीं आएगा. सोल्ड ही आएगा जब वर भी पास्ट है, सोल्ड भी पास्ट है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना कि पास्ट में ऐसा होता था. Yes, ma'am. Okay. In the past, books were sold related to the stories and also a biography.
of some people. But nowadays books are related to the related to technology. As technology is increased, the books are related to science and also some other subjects. ओके, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अर्लियर द बुक्स यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कल्चर, बट नाउ द बुक्स आर मोर ऑन साइंस एंड फिक्शन। क्योंकि Yes, ma'am. पहले रिलीजियस बुक्स ज्यादा मिलती थी, मतलब साइंस फिक्शन पे ज्यादा बुक्स मिलती हैं। Yes. चलो, ओके, गुड, इट वाज गुड। की फोन लाई ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ। Savijot, mute yourself, please. Jashan, will you be able to participate? Yes, ma'am. ओके, तो पहले आप क्यू कार्ड करो आप दोनों, फिर उसके बाद मैं आपको फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस पूछती हूँ। Okay, ma'am. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई होप कि आप दोनों को बहुत इजी लगेगा। सो द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब अ टाइम यू सॉ समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। And this is a question for all the students who are watching our video. So this is a very interesting question. I think ये हर student के लिए बहुत easy और interesting होगा, and I hope कि आप इस पे अच्छा content ढूंढ पाओगे और बोल पाओगे। The question is, describe a time you saw something interesting on social media, and your cues are कि ये कब था और आपने क्या देखा और आपने कहाँ पे देखा और आपको ये क्यों इंटरेस्टिंग लगा। तो यही सब क्यूज होते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ डिड यू फील। तो अगर आपको वो हिंट्स ना भी दें तो यू शुड नो कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड स्टोरी बनानी है अपनी। ओके, सो टेक सम टाइम, मेक सम गुड कंटेंट, और टाइम को ध्यान में रखना। ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। I can start. Yes, just give me a minute, I'll start the stopwatch. Okay, please start. Okay. Well, I like to use internet for many purposes, sometimes for study and communication with others. Here, I would like to talk about a time when I saw an interesting on internet. But my favorite channel is Instagram. I find this channel very interesting, and I am always waiting for their new posts. The channel posts about different arts and crafts, which people can learn in under 10 minutes. I first saw this channel a year ago during the Corona lockdown.
I had a lot of free time and I wanted to utilize my time doing something productive. In the past, they had related to painting. I am not good at painting, but I did try. It was a very simple, and I have been following the channel since then. Their channel has so many interesting posters. I have recommended their channel to many of my friends, and all of them feel that it is a gold mine. So that was interesting which I watch on social media. ओके जशन, आपने जितना बोला अच्छा बोला, बट लेट मी टेल यू कि आपने सिर्फ 1 मिनट बोला है, 1 minute 10 seconds. सो आपको क्या लग रहा है, आपने जब बोला, सो व्हाट डू यू थिंक कि वाज इट इनफ? ये तो सुनने में ही पता लग रहा है कि इट इज वेरी शॉर्ट. मैम ये मैंने खुद बनाया था पहले जब मैं इंस्टीट्यूट में थी. बट आपको वहां पे खुद ही बनाना पड़ेगा जशन, क्योंकि यू नेवर नो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले. तो आपको 2 मिनट के लिए बोलना ही पड़ेगा. तो आपको प्रैक्टिस इसी वे से करनी है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टाग्राम इज एन ऐप, इट इज नॉट अ चैनल. तो मैम क्या ऐप बोलेंगे इसमें? हाँ, ऐप बोल, एप्लीकेशन बोल दो, ऐप बोल दो. चैनल तो किसी भी सेंस में ये ठीक नहीं है. पर जो सबसे जितना बोला इट वाज गुड, पर आपने बहुत हाफ बोला है. यू हैव स्पोकन हाफ ऑफ व्हाट यू शुड हैव स्पोकन. ओके मैम. So please take care of that. Okay, so the students who have just joined, let me tell you the topic. आप इतनी देर में prepare कर लो, and I'll ask Savijot in the meantime. The question is, so describe a time you saw something interesting on social media. I'll repeat the question. Describe a time you saw something interesting on social media. और इसमें cues क्या होंगे कि आपने क्या देखा, कब देखा, कहाँ देखा और आपको क्यों interesting लगा. I'll repeat the question. Describe a time you saw something interesting on social media. So, Arsh, both the Arsh and Bhavan. तो आप ये प्रिपेयर करो क्यू कार्ड, जब तक मैं सविजोत से सुनती हूँ. गुड इवनिंग भवन. ओके, तो सविजोत आप रेडी हो? Yes, ma'am. 1 मिनट में स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लूं. ओके, Can I start, ma'am? हाँ जी. Social media is a tool that is becoming quite popular these days because of its user-friendly features. Social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and more are giving people a chance to connect with each other across distances. And many people post the videos on Instagram and Facebook also. I agree that many things are not useful, but some things are we can get knowledge from that things. So last year I watched an interesting video on a social networking website by the name of Instagram. The video was about a balanced diet is the key to maintaining a healthy lifestyle. According to the presenter of the video, having a balanced diet means eating a wide variety of foods in the right proportions and consuming the right amount of सविजोत food. 1 मिनट रुको आप. Yes, मैंने ma'am. आपको क्या बताया था, अगर आपने लर्न किया है दैट इज अ गुड थिंग, पर ऐसे नहीं बोलना कि आप बुक पढ़ रहे हो. आपको Yes. आपकी मिस्टेक पता है ना, आप फिर क्यों रिपीट कर रहे हो उसको? व्हाई आर यू रिपीटिंग योर मिस्टेक्स? पॉज लो, एक्सप्रेशंस दो. कुछ तो एक्सप्रेशन होगा आपकी बात में, किसी बात के लिए आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, सैड हो, कुछ तो पॉज होगा. ये तो है ना कि एक ही लाइन चलती जा रही है, कोई तो फुल स्टॉप होगी बीच में. Yes, ma'am. सो प्लीज आप आगे जो बोलोगे, उस मैंने आपको तभी बीच में रोक दिया कि आप पूरा खत्म कर दोगे, बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं है. Yes, ma'am. सो प्लीज नाउ स्पीक अकॉर्डिंगली. जो भी आप बोल रहे थे शुरू करो वहां से आप. Okay, ma'am. According to the presenter of the video, having a balanced diet means eating a wide variety of foods in the right proportions and consuming the right amount of food and drink to achieve and maintain healthy body weight. I saw that he mainly focused on a healthy lifestyle. He said that a combination of a prudent living style with the soundness of body and mind, both physical and psychological well-being is important in order to have a healthy lifestyle.
Moreover, obesity, for instance, is rare among people who have good eating habits. In this video, he showed that scientific research has proven that more than 30% of health related complexities could be avoided by having a good eating habit. This was what made their video more fascinated to me. At the end More of the video, fascinating. more fascinating to me. At the end of the video, he explained the importance of life. He said that there is no doubt the modern era is highly competitive, and also people are interested to buy a fast food and junk food. But it is very necessary to take a balanced diet, and also regular exercise, maintaining personal hygiene, etc., can make a huge difference. After watching this video, I started a regular exercise, and I shared the link with my friends also. So they also get motivated, and now they have a balanced diet, and also they are conscious about their health. ओके, बेटर था लास्ट हाफ जो आपने बोला। और जैसे कॉमा है ना, आपने बोला कि दे मेंटेन गुड लाइफ, दे ईट गुड फूड, तो थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट करो। ये नहीं कि आप एक ही टोन में बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो। वॉइस मॉड्यूलेशन पता है आप, समझते हैं आप क्या होता है? Yes, ma'am. कि कहीं पे अगर थोड़ा ऊंची बोलने की जरूरत है, यू स्पीक लाउडर, कहीं Hmm. थोड़ा स्लो बोलना है। जैसे वो आपने से कॉमा था, से आप बता रहे थे that he told us to live a healthy life, and how do we live that? By maintaining our lifestyle, eating good food. तो this is how we modulate our voice. इससे पता लगता है कि इस यहाँ पे पॉज था, कॉमा था, इससे ही एक्सप्रेशंस आते हैं, और ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। और मैंने Yes. आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आईएलटीएस का स्पीकिंग एग्जाम है, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन। अब आपने Yes. बोला ओबेसिटी, आपका ओबेसिटी समझ में नहीं, मुझे बेस्टी बोल रहे हो, बेस्टी का काम क्या क्या आ गया इसमें? सो अब क्लियर रखो, आप Yes. बोलते जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहे आपके वर्ड्स। ओबेसिटी क्लियर बोलो। वो तो तब Yes. समझ आया कि इसमें ओबेसिटी रेलेवेंट लग रहा था। Oh. सो Yes. अपने वर्ड्स क्लियर रखो। Yes, और ma'am. जैसे अपने लास्ट हाफ में, दैट वाज मच बेटर, इसी को आगे मेंटेन करना है। Okay, ma'am. अब मैं आगे जो क्वेश्चंस पूछूंगी तो उसमें दिस कंप्लेंट शुड नॉट बी देयर नाउ। Yes, ma'am. ओके, अर्श, आर यू रेडी? हाँ जी मैम, यस। चलो स्टार्ट करो आप। स्पीकर है मैडम? हाँ जी। Well, social media has become part of human life, and there are many social media apps and people like to use on daily basis, like Instagram, Facebook, and Twitter, and it is a great source of entertainment. But here I would like to talk about a time when I saw interesting on social media, and it was about an organization which work helps continuously. And one day I was surfing on Facebook, and I watched a video about a person who was helping of needy people. And this organization helps the needy people by providing food and financial support, and which is run by Molk Vatra. Molk Vatra is a famous great social worker in Ludhiana, and he runs this organization in Ludhiana and other many city of Punjab. And the most impressive thing is that after watching a video, I came to know about his organization of world, and which works of needy people by financial support and treatment of cancer patient. And actually he does not work to get earn money, because his family support him financially, and his aim is to provide he arranges donor for needy patient. And and he was awarded by many local government and many organization. And he is a youth icon, and I like him because he is famous on social media, and he is a very down to earth person, and he never show off ego, which I like the most. And I always admire him because he is doing such a great work in his young age without instead of thinking about their career life. And if I get a chance to meet him, and I never miss the opportunity.
and so this is the time when I was interesting on social media and which I like the most. गुड। आपने 2 minutes 20 seconds के लिए बोला, तो जो आपने लास्ट में पार्ट बोला ना कि इफ आई गेट द चांस टू मीट हिम, वो आप डिलीट कर सकते थे, उसके बाद सारा एक्स्ट्रा था, मतलब वहां पे आपके 2 मिनट खत्म हो गए थे। सो अच्छा मैडम, मैंने अदरवाइज केड़ा पता सी। हाँ जी। नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि 2 मिनट कब खत्म हो रहे हैं। तो अच्छा ठीक है। मतलब टीचर बताए व्हाई शुड ही टेल यू, आपको पता होना चाहिए ना, मतलब आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए कम से कम। हाँ जी तो अगर आपको उन्होंने रोक भी दिया तो वहीं पे कंक्लूड कर लो अपना, जो ठीक है। आप मतलब वहीं पे आप एंड कर दो अपनी बात को। वैसे इट वाज गुड, ठीक है। अच्छा बोला आपने। ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी फॉलो अप ਤੇ क्वेश्चंस। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ? मतलब रिपीट ऐसा नहीं है कि आप हर लाइन में एक ही वर्ड बोल रहे हो, मतलब एक पूरे अच्छा ठीक है। 2 मिनट में एक दो बार बोल लिया एक वर्ड, दैट इज फाइन, पर ये नहीं कि आप 5 6 7 बार वही वर्ड ठीक यूज है। करते जा रहे हो, अच्छा एक आध बार ओके कर लिया ओके दैट इज इनफ, मतलब दैट इज ओके। ठीक है। ओके मैडम। चलो मैम सो जब हम 2 मिनट से आगे हो जाते हैं तो अपने आप स्टॉप कर देते हैं। वो आपको स्टॉप कर देंगे, पर आपको इतना आइडिया हो कि अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा किसी ट्रिप के बारे में मुझे बताओ, और आपके 2 मिनट खत्म हो गए, अभी आप घर पे बैठे हुए निकले भी नहीं आप, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आइडिया हो कि 2 मिनट होने वाले हैं, तो आप मतलब एंडिंग की तरफ आ रहे हो, एटलीस्ट ट्राई तो ਕਈ ये ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ करो। ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ने आप ही चुप कराती तो ਮੈਨੂੰ। अगर उन्होंने करवा दिया हाँ तो जी। दैट्स देयर हेडेक, पर हमें तो दो हाँ मिनट का टाइम पता है ना, हाँ मतलब जी। वी हाँ नो जी। हमें ये इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने रोक दिया तो हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। हाँ जी। पर आपको अपना 2 मिनट की प्रिपरेशन करनी है, आपको पता होना चाहिए। वैसे द रूल इज कि यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, वो बीच में रोक रहे हैं तो दैट इज देयर मूड या देयर हाँ जो जी भी है उनका है। चलो, ठीक है। व्हाई डू पीपल लाइक टू यूज सोशल मीडिया? अर्श, ਕਿਵੇਂ ਮੈਡਮ? व्हाई डू पीपल लाइक टू यूज सोशल मीडिया? ये थर्ड राउंड है। Well, social media, people use social media on daily basis when they get a free time, and they can utilize their free time or to use social media and to get information and valuable things they can learn from it. Sabijot, same question. As per my opinion, people are connected with social media because they remain in contact with their near and dear ones. The other prominent reason is to keep themselves updated with the current news and happenings across the globe. And also, social media is a reliable medium to spend leisure time. Okay, good. Jashan, same question. Well, as per my observation, social media helps us to make new friends. While social media, people can remain in contact with with the near and dear one. They also know about the current news on the internet. What kind of things are popular on social media? Arsh, What kind of things? are popular on social media? There are several kind of things are popular in social media because people can make a new friend with the help of social media, and they can watch videos and movies with the help of social media, and they can gain popularity with the help of social media because they can upload their pictures and talent on social media, and which they can earn a good income with the help of social media, so that it is very useful for youngster. अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने हाँ विद द जी। हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कितनी बार बोला? 3 4 लाइनों में 4 बारी मैंने बोल 5 गई। बार तो बोल दिया, तो दिस इज रेपिटेशन। इसको रेपिटेशन बोलते हैं हम। हाँ जी, ये रेपुटेशन नहीं मैडम। करना, ये नहीं करना। ठीक है। तो बार बार सोशल मीडिया बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बता दे क्या पॉपुलर है, हाँ दैट जी इज इनफ। और मुझे एक बात ठीक है। बताओ, आपने बोला दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग इन सोशल मीडिया, इन का मतलब क्या होता है? मैडम मैंने पहला थोड़ा क्वेश्चन दी समझ नहीं आई मैडम, ता करके मैं फिर तो आधा जरा। क्वेश्चन में भी ऑन था, क्वेश्चन से ही आप हिंट ले लो। इन मतलब बीच में, ऑन मतलब पे, हाँ जी सोशल मीडिया के ते बीच में है कि पे है? ते मैडम हाँ जी। ओके, Savijot, same question. What kind of things are popular on social media? Numerous things are famous on social media. So most of the
most prominent activity is to upload photographs and videos. Moreover, the people use social media for advertise the products To for the advertise. uh, who advertise their products and services to improve brand awareness. Brand Okay. awareness. Jashan, same question. What kind of things are popular on social media? Well, many things are famous on social media. However, the most prominent activity is to upload photographs and videos, which we are like on social media. We can download the picture which can be see in any time. Okay. What are the advantages and disadvantages of using social media, Arsh? Well, there are a number of advantages and disadvantages when people use social media. First of all, they can feel nervous if people use social media continuously because they cannot talk with someone and they feel alone. So that time, I think sometimes they do overthinking when they use social media, and there are a lot of advantage because they can share their talent, and also they can connect with each other, and also they can watch get they can get information all around the world through social media. बार बार सोशल मीडिया के बोलने की जरूरत नहीं है. यू नीड एक बार नॉट टू. कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है. अगर आपने एक बार मेंशन कर दिया कि मैं ये हाँ जी, एडवांटेज बता रहा हूँ, ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, बार बार यू नीड नॉट टू स्पीक. आप सीधा बोल दो कि पीपल गेट टू नो द नॉलेज और पीपल गेट टू नो द न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो बार बार थ्रू द सोशल मीडिया ऑब्वियसली है कि क्वेश्चन यही है तो यही आंसर ठीक है, होगा. तो यू नीड नॉट टू ओके स्पीक मैम, अगेन एंड अगेन. इट इज प्रीटी ऑब्वियस. ठीक है. ओके सर, विज योर सेम क्वेश्चन. The primary plus point of utilizing the services of social media is people can connect with their near and dear ones and also get information about the current affairs, and also they get details. On the contrary, the major pitfall is that our privacy gets compromised and we often get fake information from social media. Good. Good vocabulary, good formation. Jashan. I think the main advantage of using social media is that it is very easy to access information, provide information, and communicate via social media. Via. Via Via. social media, it lets us make friends and keep in touch with the old friends very easily. Um, there are many instances where people have used social media to share false information. For example, recently people spread misinformation about the harmful effect of COVID vaccinations, which cause a lot of hesitancy among people about Good. Very good. vaccination. Always try to give examples. अगर आपने advantage दिया तो कोई example देते कि now if I move to Canada, so it will be very easy for me to communicate via social media with my family. Disadvantage जैसे जशन ने दी, it was a very good example. तो always try to give your answer with examples. चाहे वो writing है चाहे वो speaking है, वो अच्छा impact डालता है आपके answer का. Okay, last question. So what do you think about making friends on social networking sites? Arsh, Repeat करो फिर. what do you think about making friends on social networking sites? Well, it is very easy to use social media, and people can make new friend easily without meet and any outside, because they also they make a bonding strong with the friends and the family. And other impressive thing is that बस बड़े ही ना की. तो फिर जब आपको नहीं बोलना था, you should not have started the line, क्योंकि that is enough, इतना बहुत है. तो आप लाइंस ठीक है, अगर स्टार्ट कर दी तो उसको खत्म करो किसी ना किसी तरह.
ठीक है वहां पे आप जाके नहीं बोल सकते मैम बहुत है ना, नहीं उत्थे तो नहीं मैडम तो वहां नहीं बोल सकते ना, तो यहाँ पे हम मॉक कर हाँ रहे जी हैं। जहाँ पे आप जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वहीं पे भी वैसे ही, मतलब यू विल, आप शुरू कर दोगे फिर बोल नहीं पाओगे कुछ भी, तो दैट इज अ हाँ वेरी जी लाइक बैड इम्प्रेशन ऑन द टीचर। ठीक है मैडम ओके सविज्योत। I do not prefer making friends on social networking sites as I have heard about many instances where हर्ड। heard as I have heard about many instances where people got into serious issues by sharing information, and also it is very easy to make a fake IDs on Instagram or Facebook. We cannot trust a person we never met or known about. Thus, it is better to stay safe and avoid making friends on social media. आपने बोला सम पीपल मेक अ फेक आईडीज, या तो आईडी बोलो या तो ए मत बोलो, क्योंकि आईडीज प्लूरल है, ए सिंगुलर है। Yes, ma'am. Okay. जशन सेम क्वेश्चन। I think it is not safe to make friends on social media because it is very easy for people to pretend to be someone else. I think we should rather use it to keep in touch with real life friends. ओके गुड जशन। आपका फ्लो बहुत अच्छा है बोलने का, मतलब योर स्पीड इज गुड, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट योर स्पीकिंग। ओके तो हम राउंड वन क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आपके नहीं हुए थे सभी, जो यू ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो मैं किसी और टॉपिक पे पूछूंगी अब। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज राउंड वन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्श, why do you think it is important to learn a foreign language? yes it is very important to learn foreign language especially in the present time because most of the people like to prefer to visit Canada and other outside country. So it is very beneficial to get higher education from it, and they can communicate better with someone. Okay, good. Savijot. In the present time, many people prefer to go abroad for their further education. So it is very necessary to learn a foreign language for communicating with the foreigners. How is it helpful to you to speak a foreign language, Arsh? दोबारा repeat again करो madam. How is it helpful to you to speak a foreign language? There are several kind of things people can learn English language. First of all, they can learn English with the help of YouTube because there are a lot of channels, and they can learn English without taking cost. And other thing is that they can learn foreign language to take classes in their city, which is helpful. अर्श मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने क्वेश्चन सुना नहीं ध्यान से। हाउ इज इट हेल्पफुल टू यू टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, कि आपको क्या हेल्प मिलेगी अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो तो? ठीक है मैडम। First of all, I feel confident if I speak in a foreign language, and also I can earn a good income because I can settle myself in a reputed company. So it is very beneficial to learn a foreign language. फॉरेन। Foreign language. पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, नहीं समझ आया तो रिपीट करने को बोल दो टीचर को, बट वेरी पोलाइटली। Okay, madam. गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना, वो आपका आंसर कंसीडर ही नहीं होगा अगर आपने गलत आंसर दिया क्वेश्चन का। हाँ जी उत्थे मैडम जो मैं स्पीकिंग करदा जी उत्थे मैं कई बार पूछे मैडम रिपीट अगेन वो कर दिंदी सी वैसे बेचारी। तो आप पूछ हाँ जी सकते हो पर गलत नहीं देना आंसर। ठीक है जी। ओके सविजोत सेम क्वेश्चन। Knowing a foreign language has proved to be very helpful for हैज me and प्रूवन has proven very helpful टू बी वेरी हेल्पफुल। to be very helpful to me as I can attend foreign webinars and learn about the new things. And I also now I also comfortable to watch English movies without आई subtitles. एम कंफर्टेबल, आई कंफर्टेबल बीच में एम आर इज कुछ तो आएगा, आई एम I कंफर्टेबल। am. I am comfortable to watch English movies without subtitles. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर यू, अर्श?
इंग्लिश ते मैंने दसना कोई भी आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, आपको देखना है आपने क्या सीखा है. अच्छा मैंने मतलब दोबारा बोलो मैंने What is the रिपीट most करियो difficult part of learning a foreign language for you? when I am taking English language classes with the help of my teacher, and I it was really difficult for me to learn, but I am a little bit perfect in this language. I face vocabulary, and also I do not speak in fluency, so that I So now I that am is trying. the difficult thing. The difficult thing. Savijot, same question. What is the most difficult part of learning a foreign language for you? For me, the most difficult part of learning a foreign language is grammar. I am I'm very confused with grammar and vocabulary also. And still now, ma'am. Till now. Still now मतलब अभी तक बोलना चाहते हो? हाँ जी, कि अभी तक भी मुझे कंफ्यूजन हो जाती है. अब पहले आप पूरा सेंटेंस बोलो, उसके बाद ये वर्ड लगाना. आई एम स्टिल नॉट एबल टू, ऐसे बोल सकते हो. आई एम स्टिल नॉट एबल टू क्रैक द ग्रामर पार्ट. Yes, ma'am. And I have also a problem in listening accent of the foreigner. Okay. What is the best way to memorize new words, Arsh? Memorize मैडम किवें याद करना. केड़ा बेस्ट वे है मेमोराइज द वर्ड और अगर आपको वहां पे कोई वर्ड समझ ना आए तो क्या बोलोगे आप टीचर को? नहीं मैडम वो तो अंडरस्टैंड कर रही मैडम नहीं मतलब अगर नहीं समझ आया तो आप क्या कर हाँ जी सकते हो, तो क्या बोलोगे आप मैडम टीचर ਆਏ को? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੱਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਹੁਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 5:30 ਲਾਊਗੀ मैडम ਇਹ ਉਹने पर 5:30 अगर लाई कोई ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट है, आप उसका मतलब नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे टीचर को? मैडम ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ तो ਬੜੀ ਤਾਂ आप ਇਹ ਬਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं, अगर आता है तो आप बोल सकते हो कि प्लीज क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दो. प्लीज पैराफ्रेज द क्वेश्चन. पैराफ्रेज ठीक मतलब है जी किसी और लैंग्वेज, मतलब किसी और वर्ड्स में बता दो क्वेश्चन को. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ਮੈਨੂੰ ये ਮੈਡਮ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ पर ਜੇ हर ਮੈਂ बार ਇੱਕ नहीं ਦਾ ਹੋਰ पता ना ਸੁਣਿਆ ਸੀ आपको टीचर कौन सा ਹਾਂ आएगा. कई बार टीचर का मूड ਹਾਂਜੀ अच्छा नहीं है या लंच ਹਾਂਜੀ टाइम हो मैडम रहा है, तो यू नेवर नो कि टीचर का ਹਾਂਜੀ मूड ਇਹ ਤਾਂ कैसा ਗੱਲ है उस सही है टाइम पे. तो क्या ਹਾਂਜੀ क्यू कार्ड था आपका? मेरा मैडम हम्म. डिस्क्राइब ए बिजनेसमैन यू ओके. एडमायर अच्छा, हाँ तो जी उसके बारे में तो अगर कोई भी इंडियन बोलेगा अंबानी के बारे में बोलेगा, मेरे को लगता है, नहीं या टाटा. अंबानी ते नहीं मैडम मैं बोलिया सी मैं कोई फॉरेन सीगा बंदा उससे बोलिया सीगा फॉरेनर. फॉरेनर. फॉरेनर फॉरेनर में जी फॉरेनर इज साइलेंट, हम जी कभी प्रोनाउंस नहीं करते फॉरेनर में. ओके ओके. मैम सो बताओ इसका आंसर. व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स? it is the best way to memorize word I when I started this language and I memorize word in my mind because I repeated some word in my mind which helped me a lot to memorize word and because I am an intelligent person and I cannot forget word easily ओके. ठीक है मैंने थोड़ा बहुत ठीक है. सविजोत. I think the best way to memorize new words is to make notes and also with their meanings and to go through these notes randomly and regularly to make ourselves familiar with such words. ourselves. Ourselves. हाँ, और helped होता है, helped नहीं, helped. Okay, next is it better to learn a new word from translation or by definition? दोबारा मैडम बोलो दोबारा Is it better to learn a word from translation or by definition? it is the best way according to me it is the best way to new world by translate because I can understand in our language
without any difficulty, and so it is the best way according to me. Okay, good. Savijot. From my perspective, both are important because if we go through a definition, it will help in understanding the word, and if we translate it in our mother tongue, then it is easy to use these words in our English. Okay. So why don't some people know the language of the society they live in? रिपीट करिए मैडम. Why don't, अब आपकी टीचर हर बार रिपीट नहीं करेगी, एक आध बार तो हाँ कर जी, हाँ जी, देगी, हाँ जी, तो हाँ जी आपको मैडम. बहुत ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, हाँ जी, फिर वो इरिटेट हो जाएगी या फिर टफ क्वेश्चन से पूछ सकती है. ठीक है. So why don't some people know the language of the society they live in? भाई पंजाबी दस मैडम एक बारी. कि जो लोग अगर कुछ लोग किस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो उसकी लैंग्वेज क्यों नहीं लर्न करते? Because well, everyone person have to understand their language, and so I think it is not good for people, because if people learn their mother tongue, and they can learn another language easily without any disturbance, so I think it is not very well. Savijot, why don't some people know the language of society they live in? I think people who have migrated from some other state or country uh, find it difficult to know the language of the society they live in. Also, some people have comfortable with their native language, so they refuse to learn the new language. Good. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सिंपल, सपोज स्पेशली राउंड 3 में थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस ही आते हैं. राउंड 1 इज वेरी इजी, तो राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे. राउंड 3 मैडम किड़ा ही. No. राउंड 3 जो आपका फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, अब follow-up ये वाला वैसे part, राउंड ठीक है. 1 है, मैं आपसे एक्सटेंडेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. वैसे ठीक ये है. ऐसे क्वेश्चंस राउंड 3 में आते हैं कि ऐसा ठीक है. क्यों है, सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं. हाँ जी. तो कुछ मुश्किल भी आ सकते हैं. नहीं समझ आया मतलब तो पूछ लो, पर ट्राई करो कि एक बार ही पूछो पूरे पेपर में. ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में पूछ रहे हो, तो वो भी इरिटेट हो जाएगी टीचर फिर. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? व्हाट डू यू थिंक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? यस आंसर. सभी जो आप आंसर करो. I think that is the best stage to learn a foreign language, as the mind of child is in a growing stage and more acceptive of the new things. Also, by starting to learn a new language at uh, such an age would enable them to master it effectively. गुड. अर्श. Children can learn foreign language, फॉरेन. in their school, because children have no any pressure about their career, and so they can learn this language from their teacher. Okay. Why are some language classes boring? Savijot. I think some language classes can be boring if the teacher's focus is entirely on learn the language rather than making them understand it. Uh, and if teacher uh, taught if teacher will क्या if क्या what do you want to speak? If teacher नहीं teaches, अगर पढ़ाती है, ये बोलना है आपको. नहीं अगर टीचर्स इफेक्टिव वे से पढ़ाएंगे तो If teacher will teach in an effective way, या if teacher teaches in an effective way. विल आएगा ना या टीच Will, अगर आपको will लगाना है, if teacher teach in an effective way, या फिर if teacher teaches in an effective way, मतलब अगर आपको आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस को बनाना चाहते हो, फ्यूचर में या प्रेजेंट में.
सो फ्यूचर है तो विल आएगा, प्रेजेंट है तो नहीं आएगा, तो दैट Yes. डिपेंड्स ऑन यू. Okay, ma'am. ओके मेरी बारी अर्श. मैडम. हाँ जी. I think people lack of interest because some student cannot learn for foreign language easily because it is difficult for them, and sometimes they cannot show their interest to learn this language, and they cannot feel motivated to learn language. So it depends on their mood. Okay. Last question. So why do some people learn foreign languages fast while others learn it slow? Savijot. Some people can learn language fast. It depends on their interest in the learning and their intellectual capabilities. And also, some people have more need to learn the language as they commute to foreign. As But they want to commute. yeah, they want to commute. अगर मैं बोलूं they commute मतलब वो कर रहे हैं, करेंगे मतलब commute करेंगे. Yes, ma'am. Okay. अर्श. Some people are very serious to learn a foreign language because they will get they can get achieve goal fast if they concentrate on their purpose. So they can learn a foreign language faster than other people which are not interested a lot. Okay, good. So it was good today. जो भी आपके मिस्टेक्स थी, I told you please work on that. सविजोत स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि पॉज देके बाकी सारी गलतियां आपकी फिर क्योंकि बाकी मिस्टेक्स आर नॉट वेरी सीवियर, दे आर स्मॉल, दे कैन गेट हिडन. पर जैसे आप एक ही टोन में बोल रहे हो, दैट इज लाइक वेरी विविडली, दैट इज रिफ्लेक्टिंग, तो वो नहीं करना बिल्कुल भी, बाकी फिर इग्नोर हो जाएंगे. Okay, ma'am. और अर्श आप अच्छा हाँ बोल जी. रहे हो, पर पहली बात क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हाँ जी. क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, अदरवाइज यू आर स्पीकिंग गुड, पर फिर थोड़ा सा फ्लुएंसी पे काम कर सकते हो आप, प्रैक्टिस ज्यादा करो, थोड़ा ठीक है. फ्लुएंटली और बोलने की ट्राई करो, अदरवाइज यू बोथ स्पोक गुड टुडे. गुड सेशन. ठीक ओके, है. सो थैंक यू तो बोथ ऑफ यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग. क्लास कਦੋਂ लगूगी दोबारा? क्लास अब नेक्स्ट वीक होगी, तो स्केड्यूल आपको पता चल जाएगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता. आई गेट टू नो दैट ऑन संडे और मंडे, आपको भी लग जाएगा पता. Okay, ठीक है. so we'll meet Okay. next week now. Enjoy your weekend, study, and Savijot, all the best. आपका तो एग्जाम है अभी. Okay then, so we'll meet next week. Have a great weekend everybody and keep preparing for your exams. आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया या आपको पुराने सेशंस देखने हैं. So okay, so bye everyone. Have a great evening. Thank you. Okay.